Fun fact for you, movie marketing is a lot more B2B than it is B2C. Fundamentally, movie business mein na, an intelligent producer would earn money before the movie goes into theaters. I liked how Pathan marketed itself. Disclaimer, we didn't market Pathan, but I liked how Pathan marketed itself using scarcity. Right? क्या था? Can you go deeper? Yeah, we got Gadar marketed on tier 2 OTT or short form content apps like a Josh. We did some very good work with Chingari. If you go across the streets of Bombay, you would see a 100-feet long mural of Sunny Deol. It's going to redefine the way people look at single screen driven movies or content. The weekend numbers are going to just blow away people's minds. On today's episode, we have with us Shrenik Gandhi. Shrenik co-founder and CEO है White Rivers Media के. White Rivers Media is India's leading marketing and advertising agency in the digital space. इस पॉडकास्ट एपिसोड में मैंने और श्रेनिक ने काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर बात करी है, बट मेजरली ऑन दिस 3 टॉपिक्स. फर्स्ट, मूवी एंड जेंजी मार्केटिंग. सेकंड, लीडरशिप मेंटल मॉडल्स जो श्रेनिक यूज़ करते हैं इन वाइट रिवर्स मीडिया. तो अगर आप एक एम्प्लॉय हो जिसको कॉर्पोरेट लीडर क्लाइम करना है, और इफ़ यू आर समवन वो इज़ एन अर्ली स्टेज फाउंडर, तो आप ये मेंटल मॉडल्स को यूज़ कर सकते हो इन ग्रोइंग योर कंपनी. थर्ड, वी बोथ आर वेरी बिग फैंस ऑफ शाहरुख खान, तो हमने शाहरुख खान के अराउंड बहुत अच्छा एक डिस्कशन किया है, और श्रेनिक ने मल्टीपल टाइम्स काम किया है शाहरुख खान के साथ. तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी स्टोरी शेयर करी है शाहरुख खान के बारे में, एंड वाई ही इज़ द लास्ट ऑफ स्टार. तो वो स्टोरी मिस मत करना. एंड वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, जवान जो रिलीज़ हुई है अभी कुछ दिन पहले, वो वाइट रिवर्स मीडिया ने डिजिटली प्रमोट करी है. इस पॉडकास्ट एपिसोड को रिकॉर्ड करने के बाद ना मुझे बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिला था, क्योंकि जिस टॉपिक्स के अराउंड बात हुई है, जिस तरीके से श्रेनिक ने आंसर्स दिए हैं इस पॉडकास्ट एपिसोड में, और जिस तरीके का फ्लो था हम दोनों की कन्वर्सेशन का, वो देखकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ जस्ट क्यूरियस पॉडकास्ट, वेयर वी डिकोड द माइंडसेट ऑफ आवर गेस्ट थ्रू क्यूरियोसिटी. एंड ऑन टुडेज एपिसोड, I decoded the mindset of Shrenik Gandhi. Hello Shrenik, how Hello. are you? All well, yeah. All well. Pumped up. Very excited for the podcast today. Yeah. So there is a very interesting story Shrenik, I have. Call me by the first name. Huh? Call me by my first name, Shrenik. Okay. So Shrenik, I have a very interesting story. So basically how I got to know about White Rivers Media. So one of my friend works at Comedy Factory. Okay. So she came to a meeting with you with Vidya ma'am. Vidya. Okay, I know. Yeah. Yes, of course. Yeah. Of course. So she told me at that point of time there is a company called White Rivers Media. Correct. Before that, Oh, that's honestly, why the Baroda connection. हाँ. Interesting. So she told me that there is a company called White Rivers Media. They do some fantastic work, and then I found out about Correct, you and correct. Nitesh and White Rivers Media. Nice. So yeah. Nice. Small world, huh? Very small world. Nice. But I always think about what will be my first question whenever I'm doing a podcast. I just want to know, like, you are running a agency from 11 years now. What keeps you going even now? I think the best thing about running an agency is you get to work on a wide width of clients, right? Correct. I was talking to someone earlier today. We work with a super B2B, very heavy focused B2B brand which is listed on NASDAQ, which this company has their own very strict guardrails to work on, where there is very limited scope of creativity, but there is a lot more scope of consistency. That is one spectrum. The other spectrum of brands we work with is, say, a movie called Jawan, which is Shahrukh Khan's next movie, or a movie called Oppenheimer, which just got released some time back, where you can go all out with your creativity. So you get such a nice spectrum, such a nice width to work with, right? That it is thrilling, it is fun. Yeah, so it keeps us going. True. You don't get bored, basically. There are so many Correct. things you can do. Like, the creative, the marketing soul in you would always look forward to new types of challenges, new types of markets, new type of brands, new type of consumers. So it's good thrill. So do you think कि फिर अगर आपको एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में होना है, so you should have that T-shaped kind of knowledge foundation where you have a very solid depth about one thing, and you know many broad things about many other things, that this requires like jack of all trades and master of few.
not one but Yeah, master few. I think with the whole advent of AI and multiple other things, power of information is, something you need to have, right? Correct. That means you need to know a lot of things about a lot of categories, right? When you know a lot of things, it's okay if you don't know everything about every category, but you need to know a lot of things about a lot of categories. So I would not qualify it as a T. I would rather say it's like a wavy curve where you need to know a lot about lot, right? And that's important in today's day and age, be it advertising or be it any other field. Hmm. So True. And so basically I wanted to start with this, that ki you in one of the podcasts you said that ki client abhi ke, like when you take on the work, you know, a lot of people what they do is कि short term काम है, still they think and go ahead and do is कि client को एक लंबा बड़ा project देंगे, वो सब देंगे, and they don't deliver the result, and correct. they quickly change the agencies because so many agencies are pitching one client. So you said about कि give short term solutions to short term results. Why do you think it is very important in today's day and age कि आपको ये चीजें करनी चाहिए when you are taking on a newer project, कि आप नए काम के साथ काम कर रहे हो, तो पहले का आप थोड़ा उसको पेन किलर की तरह आप उसका पेन वो रिलीज कर दो, Correct. and then think about a bigger picture. Correct. No, yeah, so we have to understand what is the final objective. There are a lot of, say example, a lot of businesses, we have to understand that there is no one Ramban ilaj to everything. Correct. So yaar, as a marketer, we have to work for our consumers. Correct. As an agency, who's our consumer or a customer, it is our client. Right? तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है वो ध्यान में रखते हुए ब्रांड का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये दो चीज को हम ध्यान में रखें, राइट? तो वी विल बी एबल टू कम अप विद द राइट सॉल्यूशंस, राइट? व्हाट इफ वी अज्यूम दैट ब्रांड का ऑब्जेक्टिव है कि यार, या फिर मार्केटर का ऑब्जेक्टिव हम ये अज्यूम करें कि यार लॉन्ग टर्म ब्रांड एफिनिटी बिल्ड करना है, whereas probably वो ब्रांड का ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, राइट? सो द पॉइंट इज यार, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार कई कई जगह पे शॉर्ट टर्म फिक्सेस की जरूरत होती है, कई जगह पे मिड टर्म, कई जगह पे लॉन्ग टर्म. सो राइट फिक्सेस एट द राइट टाइम इट्स इंपॉर्टेंट. Right fixes at the wrong time doesn't work. Wrong fixes at the right time doesn't work. Right? So it has to be right fixes at the right time. It would be short, medium, long, whatever it is, but it has to be the right fix. Then how do you find that? Talk. Be curious. So one of the values we have at White Hours is curiosity. Right? I believe curiosity से जो आप solve कर सकते हो, वो I think overconfidence या if you assume that you know / assumption से नहीं कर सकते. तो you have to be fundamentally curious. You have to understand. You have to ask a lot of questions. It's okay to ask stupid questions. People forget, right? Like लोग बड़ी बड़ी चीज भूल जाते हैं. तुम्हारा stupid question कौन याद रखेगा, right? उनको लाइफ में 100 काम है, right? आप अपने questions पूछ लो. It doesn't matter, right? So be curious. Ask a lot of relevant questions. Don't and never ask questions for the sake of asking questions. Always and always ask questions for the sake of curiosity, right? To solve for something. The solve can never be कि मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगा या 4 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछूंगा. It always has to be कि यार मैं सही जवाब ढूंढूंगा. True. It is one of the one of my motive of this podcast is also that कि अगर आप curious होंगे तो आपका एक learning वाला एक जो आग आपको चाहिए ignite होगा वो. Correct. And learning वाला जो आग ignite होगा, then you will learn a lot about that thing, and probably it will help you take an informed action or decision on that particular thing. So I think curiosity fundamentally helps. Correct. So I want to know, what are you fundamentally curious about? Yeah, I am as of right now fundamentally very, very curious about AI. Correct. I have always been a curious marketer. I people look forward to good content. I look forward to good ads. So, so in my friends, family circle, I hate it when someone buys a premium subscription to a YouTube or a Spotify, because I look forward to seeing ads. I look forward to hearing annoying ads on Spotify to understand. That's my curiosity to learn कि कौन सी brand क्या बात कर रहा है, right? So these are two types of curiosity which is there right now. Right. And आपकी favorite ads कौन सी है? Like from the
your OG ads and some of the recent works in ad industry? Yeah, so one of my favorite ad is of course a lot of TV work which Fevicol does. Right, of course, so एक milestone ad उन्होंने पीयूष पांडे के साथ बनाई थी, right, where the whole transition of sofa, right, was shown. I think that was phenomenal writing, right? So that's of course a Cadbury ad, right? We don't see those type of ads because of course the shelf life of content is much more lesser these days, right? In terms of new ads, I think a lot of movie campaigns which we've been doing as well, a lot of movie campaigns which are happening across the industry, I look forward to them because they're I think pretty new age, pretty dynamic and good fun. So, say example, I liked how Pathan marketed itself. We didn't market Pathan, but I liked how Pathan marketed itself using scarcity as a matrix. Right? क्या किया था? Can you go deep on that? So India ka, you know, if for lack of a better word, who is the biggest Bollywood asset, right? Shahrukh Khan, of course. Right. If the biggest is available in surplus, right? तो कैसे चलेगा, right? तो biggest को उन्होंने scarcity से market किया, where his face time to the media, his face time to the audience was very limited through the campaign. Very relevant, very right types of face time of King Khan were done. Again, this is my understanding as a consumer / a marketer. I am nowhere telling this statement on behalf of the people who market it, right? Of course, since we are working with Shahrukh Khan for some other projects, that's why I'm putting out this disclaimer. But yeah, I really love the way they marketed, where absolute limited time के लिए he was available for the right kind of noise. करके शेयर अपनी गुफा में घुस जाता था. हाँ, वो बहुत ही ट्विटर के ऊपर ask me anything वो वही वाला कर रहे थे. And it worked. Yeah. It worked very well, right? We are seeing the numbers. It's still doing some great numbers across the world. I love the way Gadar has been marketing. We've been, party to that as well. If you go across the streets of Bombay, you would see a 100 feet long mural of Sunny Deol. We got Gadar marketed on tier 2 OTT or short form content apps like a Josh. We did some very good work with Chingari, right? So we picked up the right kind of platforms to give right kind of content and messaging, right? And Gadar, I think, as while we're recording this, of course, the numbers aren't out, but I'm sure by the time people are seeing this, there will be a lot of numbers to prove these points. It's going to redefine the way Bollywood numbers are done, and I'll just repeat this line. It's going to redefine the way people look at single screen driven movies or content, right? It is the weekend numbers are going to just blow away people's minds. Correct. It is for masses. It is correct. For like tier 2, tier 3 मैं बोल सकता हूँ. Yeah, good masses. Absolutely. Good masses. Absolutely. कई बार tier 1 में भी masses होते हैं यार. Yeah, correct. Right. And कई बार tier 2 में भी लोग intelligent content consume करना पसंद करते हैं. Correct. Right. So content consumption should not be defined by geography. Of course, there are trends and trends have to be respected. Yeah, but आपने जो चीज बोली, so I want to go into this film digital marketing वाला thing with you. आपने एक चीज बोली गदर वाले में कि at right places and at right things we are marketing and we are seeing the results as well. वो क्या चीजें होती है? Can you just layer it down 2-3 steps? जितना आप बता सको. नहीं यार, तो मैं आपको in general बताता हूँ मूवी में कैसे होता है. हाँ. राइट, तो यार मल्टीपल एसेट्स होते हैं. करेक्ट. सो सबसे पहले तो होता है व्हाइट बोर्डिंग, राइट? व्हाइट बोर्डिंग या फिर एक राउंड टेबल कन्वर्सेशन होता है, वेयर हर मूवी को हम कैसे पोजीशन करेंगे, कैसे ईच कैरेक्टर को पोजीशन करेंगे दुनिया के सामने, वो डिस्कस किया जाता है. फॉर ईच मूवी वी डू अ लॉट ऑफ व्हाइट बोर्डिंग सेशन, राइट? सो से एग्जांपल फॉर द मूवी दृश्यम, राइट? वी वर वर्किंग विद दृश्यम 2, जो अभी अजय देवगन की मूवी है, राइट? सो हम हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज था दृश्यम 2. इट वाज अ सस्पेंस मूवी, राइट? तो अगर हम उसमें बोले कि यार ये सस्पेंस मूवी है, ठीक है, बट
द फैक्ट इज कि उसका ओरिजिनल साउथ वर्जन वाज आउट ऑन नेटफ्लिक्स या सम ओटीटी ऐप. तो अगर हम बोले दुनिया को कि यार ये सस्पेंस मूवी है, तो लोग जाके ओटीटी पे देख के सस्पेंस देख लेंगे, तो आपको पिक्चर देखने में मजा ही नहीं आएगी, राइट? सो द पोजिशनिंग विच वी थॉट ऑफ दैट टाइम वाज कि यार आप विजय की जर्नी एंजॉय करो, राइट? वेयर सस्पेंस वाज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द मूवी, राइट? सो दैट्स हाउ वी मनूवर्ड द कम्युनिकेशन. क्योंकि अगर मैं सस्पेंस फर्स्ट अप्रोच रखता मार्केटिंग का, तो वो तो खुली किताबें लोग देख लेते थे क्या है सस्पेंस, तो पिक्चर पिट जाती थी. So that's how the first value filter is done, wherein again, not just we, it's a round table full of marketeers. We represent the digital and the social ecosystem. There is someone from the poster team, there's someone from the creative team. Of course, most times we also have the talent, which is the actors, right? So we do a round table there. एक बार जब positioning ठीक हो गई, right, हमें पता चल गया क्या कर रहे हैं, then we think of a go to market strategy. अभी go to market क्या होता है, 3 stages में होता है. पोस्टर होता है, टीजर होता है, ट्रेलर होता है, राइट? पोस्टर होता है अपना पहला लुक जो मूवी का बिजनेस डिफाइन करेगा, राइट? सो दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकंड होता है टीजर. टीजर होता है एक झलक ट्रेलर की कि ट्रेलर कैसा दिखने वाला है, राइट? टीजर जनरली पोस्ट किया जाता है टू क्रिएट, ये बोलते हैं ना यार, गर्मी क्रिएट करने अबाउट द ट्रेलर, अबाउट इन द होल B2B इकोसिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स. फंडामेंटली मूवी बिजनेस में ना प्रोड्यूसर जनरली, an intelligent producer would earn money before the movie goes into theaters. ठीक है? तो उस हिसाब से मल्टीपल एसेट्स मल्टीपल टाइम पे दिए जाते हैं ताकि मल्टीपल डील्स स्ट्राइक की जाए, राइट? मल्टीप्लेक्स से हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर से हो गया, मल्टीपल डील्स की जाती है. सो फन फैक्ट फॉर यू, मूवी मार्केटिंग is a lot more B2B than it is B2C. What? Like I said, हाँ. मैंने जो टीजर कई बार हम बनाते हैं या फिर पोस्ट करते हैं, वो होता है क्योंकि हमें चाहिए कि प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, जो मूवी डिस्ट्रीब्यूट करेगा थिएटर्स में, हाँ. उसके साथ सही परसेंटेज नेगोशिएट करे. वाह, करेक्ट. करेक्ट. तो अगर मेरा टीजर चल गया तो प्रोड्यूसर जा सकता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, बोलेगा देखो टीजर चला, मेरे को इतना शेयर चाहिए. Interesting. So movie marketing is, it's going to be a eye-opening fact for a lot of people, but yeah, movie marketing is a lot more B2B than you think it is B2C, right? हर स्टेज पे पहला गाने का टीजर आता है तो हम म्यूजिक राइट्स तो खैर पहले ही बिक जाते हैं, बट फिर भी उस हिसाब से भी म्यूजिक राइट्स बेची जाती है, राइट? फर्दर थिएटर राइट्स बेची जाती है, ओवरसीज राइट्स बेची जाती है, राइट? तो हमें कई बार लगता है कि यार मूवी मार्केटिंग हम करते हैं ऑडियंस के लिए. मूवी मार्केटिंग ऑडियंस के लिए होता है सिर्फ और सिर्फ आखिरी हफ्ते में. 85% of movie marketing is B2B. Interesting. This is very ठीक है? interesting. So 80-85% of movie marketing is for B2B. हाँ. Right? So and for most movies, right? कई बार मूवी होती है जो पहले से बिक गई है, हाँ. राइट? बाय बिक गई आई मीन उसकी थिएटर राइट्स बिक गई है, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स बिक गई है, ओटीटी बिक गई है. देन वी डू इट फॉर द कंज्यूमर्स, राइट? करेक्ट. सो कमिंग बैक, गो टू मार्केट बनाया जाता है, राइट? हाँ. गो टू मार्केट 3 चीजों में होता है, पोस्टर, टीजर, ट्रेलर. ट्रेलर लॉन्च हो जाता है, फिर 1-2-3 दिन ट्रेलर सस्टेनेंस चलता है. जनरली 4 से 6 हफ्ते का मूवी कैंपेन होता है, उससे ज्यादा कोई मूवी कैंपेन नहीं कर सकते, हाँ. राइट? उसका कारण है, आपने लास्ट मूवी कौन सा देखा? रॉकी और रानी. रॉकी और रानी कौन से दिन पे देखा रहेगा आपने अप्रॉक्स? सेकंड और थर्ड डे पे देखा, बराबर है? से संडे को देखा आपने. हाँ. टिकट कब खरीदी आपने उसकी? मैंने उसी दिन खरीदी थी. Exactly. Most times people buy the ticket on the same day or a day before or at max 2 days before. ठीक है? तो आप अगर टिकट खरीदने ही नहीं वाले हो 6 हफ्ते पहले, तो मैं आपके लिए मार्केटिंग ही क्यों करूँ? तो मैं परसेप्शन बिल्डिंग करता हूँ, तो मैं तभी सेल्स नहीं करूँगा. तो फर्स्ट अगर हम 6 हफ्ते की कैंपेन करते हैं तो पहले 4-4.5 हफ्ते हम परसेप्शन बिल्डिंग पे फोकस करते हैं, जिससे मूवी के बारे में हवा हो, जिससे हम B2B सेल्स कर सकें. एंड लास्ट 1.5 वीक्स परसेप्शन से आपको एज अ कंज्यूमर पता चल गया मूवी क्या है, इट्स अ ग्रेट बाय प्रोडक्ट, राइट? सो मूवी मार्केटिंग इज परसेप्शन मार्केटिंग. एंड देन कमिंग बैक, गो टू मार्केट होता है, फिर 2-3 दिन का ब्रेक, ट्रेलर सस्टेनेंस होता है, देन वी स्टार्ट ड्रॉपिंग एसेट्स.
ठीक है, तो टिपिकली कोई भी एक अच्छी मूवी में 2 से 3 गाने होते हैं, 2 से 3 डायलॉग प्रोमो होते हैं, कई बार एक सेकंड ट्रेलर होता है और फिर टिकट बेचते हैं। तो हर तीसरे चौथे दिन 5वें दिन पे एक एक एसेट ड्रॉप किया जाता है, उसकी राइट फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, कौन सा एसेट कब ड्रॉप करेंगे वो एक वो राउंड टेबल पे डिस्कस होता है, राइट, डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स वी गॉट। एंड फिर जब ये सारे एसेट्स ड्रॉप हो जाए तो टिकट बेची जाती है। सो दैट्स हाउ मूवी मार्केटिंग इज डन। करेक्ट, करेक्ट। और ये जो शो टाइमिंग्स लगाए जाते हैं, ये उसमें भी कहीं ना कहीं पे मार्केटिंग का से होता है। सो आई हैव हर्ड दिस स्टोरी दैट इट्स अ वेरी, क्या किस तरीके से बोलते हैं कि इट्स अ वेरी फेमस स्टोरी ऑफ मंगल पांडे। आमिर खान न्यू दैट मूवी वाज गोइंग टू फ्लॉप एट द थिंग, नहीं पसंद आएगी लोगों को, ही न्यू दैट। सो व्हाट ही डज दैट, 9 AM का शो था, फिर उसके बाद 9:10 या 9:05 का शो था, 5 या 10 मिनट के ही शो थे। इट हिज पर्पस वाज कि लोगों को एक शो या दूसरे शो वालों को सिर्फ पता ना चले कि कैसे मूवी है, और हम लोग पैसा रिकवर कर ले इन यार द। उससे तो ना पहले 2 दिन पैसे कमाते हो ना। हाँ, सी अगेन थिंक ऑफ इट, a successful a smart producer would take home money before the movie is out, करेक्ट। ठीक है। जनरली ये टैक्टिक्स यूज की जाती है क्योंकि क्या होता है ना, एक एक्टर ने ओपनिंग कितने की उससे उसके नेक्स्ट फिल्म का रेट डिसाइड होता है। करेक्ट। अगर से एग्जांपल, अगेन जस्ट फॉर एग्जांपल से कार्तिक आर्यन does a double digit opening, so there could be another type of price he could charge. If someone ends up doing a single digit opening or a lower single digit opening, he can only command a certain price. If a Rajnikant does a 100 crore opening, he commands a certain type of price, करेक्ट। right? So उस हिसाब से पूरा प्राइस डायनामिक्स वर्क होता है। So like lot of people get affected the way a movie performs, like Correct. actor करेक्ट दूसरे। यार, ये तो पूरी इंडस्ट्री है ना यार। अभी जैसे हाँ, एग्जांपल, अगेन व्हेन वी वर मार्केटिंग जीरो, आई रिमेंबर शाहरुख खान हैड मेंशन्ड इन वन ऑफ द पोस्ट मूवी कन्वर्सेशंस कि यार ही इज द फेस, बट हजारों जन, लिटरली हजार के ऊपर लोगों ने काम किया मूवी पे, राइट। सो बट अगेन दैट्स अ अपसाइड एंड डाउनसाइड ऑफ बीइंग एन एक्टर, क्योंकि पिक्चर चल गई तो सारा क्रेडिट एक्टर डायरेक्टर, नहीं चली तो सबके लिए वही है। interesting. I was reading Karan Johar's biography. So in that he mentioned कि student of the year के अंदर our budget was certain amount, और because it was my movie, so he said कि मैंने धूमधाम से पैसा खर्च किया, and the just movie got over budgeted by like few crores, few नहीं बहुत सारे crores. So just before the release, like 2-3 weeks before, he realized that ये कुछ मजा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। He added that disco song after realizing कि मुझे ये वाला song चाहिए होगा। He flew to Kolkata to talk with Harji Goenka because सारेगामा के पास rights थे उनके। He like asked for a favor कि आप मुझे ये free में ये वाला गाना दे दो because rights was with Sony Music, ये वाले student of the year के। And then came and the disco song created the buzz around student of the year a lot. And then फिर वो walk-ins फिर वहाँ से करेक्ट हाँ बहुत बढ़ने लगे। So can you tell me a similar, like similar तो नहीं, but this kind of is kind of a story कि जहाँ पे कुछ दूसरे tactics से मूवी बचाई जाती है। यार बचाई जा, मैं अगेन आई विल स्पीक अबाउट example. Again, the example cannot be construed as a official statement of the movie, so I want to put that disclaimer because we worked on the movie. But again, जब हम ब्रह्मास्त्र मार्केट कर रहे थे, राइट, अगेन उस साल की सबसे बड़ी पिक्चर थी, सबसे बड़े स्टार कास्ट जो बॉलीवुड में कभी नहीं देखे थे, इतने सारे ग्रैंड स्टार्स एक साथ, राइट, पैन इंडिया में नहीं देखे थे, राइट। वी रियलाइज्ड जिस दिन केसरिया सॉन्ग ड्रॉप हुआ, राइट, you know, again the industry estimates were कि यार जो ओपनिंग 22-23 करोड़ की दिख रही थी, ये सॉन्ग की वजह से 32-33 करोड़ पहुंच गई, एक 40% जंप दिखने लगा ओपनिंग नंबर्स में। जंप कैसे दिखता है? देयर आर एजेंसीज लाइक एन ऑरमैक्स एंड अदर पीपल हु कीप कॉन्स्टेंटली डूइंग रिपोर्ट्स और गिविंग आउट रिपोर्ट्स टू द इंडस्ट्री टू से कि यार एस्टिमेटेड ओपनिंग इतनी दिख रही है पिक्चर की, राइट। एंड यार एक और चीज है, मैं आपको समझाता हूँ, पिक्चर बनती है या पिटती है पहले शो के बाद। अगर से एग्जांपल किसी ने 3 साल लगा दिए पिक्चर बनाने में, ठीक है, आपको वो एक्टर डायरेक्टर का माइंडसेट एक बार सोचो, जस्ट गो इनटू हिज माइंड। फ्राइडे को सुबह को पिक्चर लगी है, ठीक है, 9 बजे का शो हुआ है,
3 घंटे के अंदर उसके पिछले 3 साल की मेहनत चली है कि नहीं चली है पता चलेगा. True. So think of the pressure which these guys are on a Friday. Interesting. हाँ, ये चीज तो है. And how did you like this marketing around Barbie Oppenheimer? So again, we were on the other side. हाँ. I liked कि you were on the other side, to be very honest. So no, we marketed Oppenheimer. हाँ, Right? हाँ, So but you know, I really liked it. The fact that they kind of they curated a whole sensation out of a character. Yeah. Right. It is also very inspiring because it opens up doors for so many other characters which exist in the world. Right. That if you have the right story, if you have the right marketing around it, you can do wonders. Right. In terms of things which they did, I think they were fantastic. The promotions which were done globally, fantastic. Right. The whole fact that it became a Barbie versus an Oppenheimer. Right, and you know, at times Barbie and Oppenheimer, I think both films benefited out of it, frankly. Yeah. Like, of course, there are audiences for both films, but इसमें एक overlap audience बन गया because of that common campaign, which was more fan made than driven by the studios. Yeah. It was more like कि हमारे लिए वो जितना मेरे पापा उनसे सुना है कि it was more like गदर एंड लगान आई थी उस टाइम पे जितना क्रेज था. Correct. सेम कि people were not saying कि गदर वर्सेस लगान, but people were saying गदर एंड लगान. दोनों देखने जाएंगे. And I think Barbie like marketing team promoted as Barbie Heimer. ऐसा कुछ करके वो भी hashtag वो कर रहा था. Correct. Interesting. So I have a and I think movie as a business now we have to understand is a great escape. आपको सब 1000 रुपीस में आपकी लाइफ की जो इश्यूज है सब है वो साइड में रख के आप वो सब डार्क स्क्रीन से चालू होता है. यू एस्केप इनटू अ होल वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, राइट? एंड दैट्स व्हाई पीपल लव मूवीज. दैट्स व्हाई इट्स अ सब कल्चर व्हिच पीपल लव, राइट? क्योंकि यू एस्केप आउटसाइड ऑफ योर रियलिटी, व्हिच इज, and generally you see a better story than yours, generally you see a better ecosystem than yours, and hence you look forward to spending that 200 to 1000 bucks whatever you spend on a movie, क्योंकि आपको एक shortcut escape मिलता है लाइफ में, right? And hence good content is always going to work. ठीक है, क्योंकि people want to see a lot more content, be it your phone, be it your theater, be it wherever, right? Of course you have to be cognizant of the fact कि यार एक एवरेज इंडियन 2 महीने में एट मैक्स 3 पिक्चर देख सकता है थिएटर में. करेक्ट. सो देखो क्या होता है ना, अंडरस्टैंड वन थिंग, इंडिया की सबसे बड़ी पिक्चर आज तक की कौन सी? 1000 करोड़ की है, बाहुबली ने, राइट? आप 200 रुपए टिकट का भाव पकड़ो, बराबर है, डिवाइड करो, तो टेक्निकली आपको समझेगा कि यार 5 करोड़ लोगों ने गदर देखी, अपना बाहुबली देखी. ठीक है, सिंपल हिसाब है. सो अगर इंडिया की सबसे बड़ी पिक्चर 5 करोड़ लोगों ने देखी आउट ऑफ अ देश विच इज 125 करोड़, तो एट मैक्स मूवी गोइंग ऑडियंस 10 करोड़ लोग या 15 करोड़ लोग है, उससे ज्यादा नहीं है. करेक्ट. सो यू हैव टू मार्केट ओनली टू दैट ऑडियंस. That means कि you are only catering to 10% of Indian audience. Correct. Not even that. उससे भी थोड़ा कम हो गया. करेक्ट. सीधा हिसाब है ना. इंडिया की सबसे बड़ी पिक्चर है. ट्रू. और 200 रुपए एवरेज टिकट भाव पकड़ो. हाँ. हाउ यू कैन इंक्रीज दिस नंबर? वो फिर किस तरीके से होगा कि 10 करोड़ से हम लोग ट्राई करते हैं कि 15 करोड़ हो जाए? तो यू नो वी हैव रियलाइज्ड अगेन बोगो एज ऑफर बाय वन गेट वन, या फिर चीपर एंट्री टिकट, राइट? हमने काफी मूवीज में एक्सपेरिमेंट किया था वेयर एंट्री टिकट्स weren't as expensive, right? या फिर ticket prices weren't as expensive. Can you give me examples? Yeah, I'm not at liberty to say, but example I've seen, say movies. दृश्यम ने किया था, ब्रह्मास्त्र ने नहीं किया था, but दृश्यम ने किया था. There were many movies जो non expensive, 100 रुपए 150 रुपए टिकट पहले दिन शो की. तो पहले 2 दिन शो की या पहले दिन की शो की 150 रुपए टिकट करते हैं, तो उससे बेनिफिट ये होता है कि यार a lot more people will sample your content on day one. ठीक है, लॉजिक ये है कि यार आप पहली बार पिक्चर देखोगे, आप कभी भी पिक्चर देखोगे ना, आप एटलीस्ट एक जन से बात करोगे.
बाहर एटलीस्ट वन, उससे ज्यादा ही लोगों से बात करते हो कि आपने पिक्चर देखी, करेक्ट। ठीक है। तो द आइडिया ऑफ अ मार्केटियर इज 4 P होते हैं, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, ठीक है। तो प्रमोशन तो हो ही रहा है, पर प्राइस को अगर अपन राइट वे में खेले, हाँ। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना कि यार you can get a lot more people to sample your content. A lot more people sample your content. If you're confident on your content, then a lot more word of mouth will spread. A lot more word of mouth spreads, it leads to conversions. कई बार ब्लॉकबस्टर प्राइसिंग होती है, चाहे वन ऑफ द खान मूवी, हाँ। पता ही लोग पिक्चर देखने आने वाले हैं, पता ही है कि लोग फ्लॉन्ट करने वाले पिक्चर के बारे में, तो क्यों ना हम एक्सपेंसिव प्राइस रखें। तो उस हिसाब से भी चलता है, सो इट्स अ गुड मिक्स। कई बार हमें पता है कि यार से एग्जांपल है, खान मूवी है, ठीक है, तो खान फैंस ने, कोई भी एक खान है, ठीक है, उसका जो फैन इकोसिस्टम है, उन्होंने पिक्चर देख ली, बुधवार तक वो खान यूनिवर्स खत्म हो गया, ठीक है, शुक्रवार से बुधवार तक। तो कई बार होता है कि बुधवार एंड गुरुवार को 150 रुपए प्राइस होता है, कि अगला फ्राइडे आए उसके पहले लोग एक सेट और 10 और 2-4 लाख लोग अपनी पिक्चर देख लें। सो उस हिसाब से भी प्राइसिंग खेली जाती है। कई बार फ्राइडे को करते हैं कि यार मुझे पता है कि मेरे नेक्स्ट वीक में जो पिक्चर आ रही है, ठीक है, एग्जांपल, मैंने फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ में मेरी एक खान की मूवी है जो हम मार्केट कर रहे हैं, राइट, तो मुझे पता है कि सेकंड फ्राइडे में जो पिक्चर आ रही है ना, वो थोड़ी वीक होने वाली है, ठीक है, तो मुझे पता है मैंने जो मेरा इकोसिस्टम है शुक्रवार से गुरुवार तक कवर कर लिया, ठीक है, तो मैं दूसरी पिक्चर के ऑडियंस को लेने के लिए खान की पिक्चर का प्राइसिंग बढ़ा कम कर देंगे, सॉरी, ताकि लोग बोलेंगे यार 400 रुपए में इसको देखो, उससे अच्छा 150 रुपए में खान को देखो, मेरे को तो एस्केपिज्म चाहिए लाइफ में, तो मैं एस्केपिज्म खान के साथ करूं। करेक्ट, दैट्स आल्सो देयर, या ट्रू। सो इट्स अ लॉट मोर science than you can think of. Yeah, true. So I have a very innate curiosity about this kind of thing. So I watch all the round tables. I say this very, like, I flaunt this, that I watch entire Karan Johar interviews about these things. Correct. कि किस तरीके से होता है, क्या नहीं होता, कि बीच में उसने like around 2018-19 he said that कि now Wednesday has become the new Friday, ऐसा कुछ, Saturday ऐसा कुछ बोला था। Now I want to talk about कि OTT वाला फिर किस तरीके से होता है, उसमें metrics क्या होता है to judge a movie or a web series, किस तरीके से हुआ। One of the thing you said about positioning, so I did a episode with Rohit Raj, the Glitch co-founder. So they marketed Narcos in India. So he said that कि हम लोगों को ऐसा था कि Narcos A+ content, फिर ऊपर से ड्रग डीलर वो सब वाला है, किस तरीके से करे प्रमोशन, बिकॉज नेगेटिव इमेज वो सब नहीं बनानी। करेक्ट। बट द सेम कि मार्केटिंग टेबल पर ये डिसाइड हुआ कि एट द हार्ट ऑफ इट हु इज पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो एस्कोबार इज एन एंटरप्रेन्योर। उस टाइम पे थोड़ी वेव स्टार्ट हो रही थी स्टार्टअप वाली वो सब वाली, so they positioned Pablo Escobar as an entrepreneur. They created content on all this around this, and those guys marketed Narcos as a Pablo Escobar as a entrepreneur. And how that's how they position Narcos and how we watch it. Correct. So I just want to know, my first question is, what are some of the metrics to judge कि OTT पे ये movie चली या नहीं चली? Interesting. Yeah, so honestly each OTT has their own metrics. हाँ. ठीक है. Most times it is the final sales, subscriber base कितना बड़ा, ठीक है. काफी टाइम ये होता है कि यार कितने वॉच मिनट्स हुए, जैसे वन मूवी वी वर अ छोटा पार्ट ऑफ इज अ मूवी कॉल्ड बंदा, जो भी Z5 पे है. इट हैज गॉट द मैक्सिमम व्यूज एवर फॉर एन OTT इन दिस ईयर, राइट. आई एम फॉरगेटिंग द काउंट, इट इज इन अ फ्यू 100 million, राइट. तो उतने मिनट्स कंटेंट व्यू किया गया, राइट. सो दैट इज आल्सो मैट्रिक्स. एज ऑफ राइट नाउ देयर इज नो पार्क लेवल मैट्रिक्स डिसाइडेड व्हिच would say कि यार ये पिक्चर सक्सेस है, ये पिक्चर सक्सेस नहीं है, right? But yeah, TRPs नहीं है as of right now, right? Because each OTT is like a walled garden in itself, right? They would not share out the data because that is their gold mine. Correct. So when you are doing an OTT show, let's say कि आपने जैसे फैमिली में ऐसा कुछ भी किया, मतलब you are doing an OTT show has a good actors in it, good story, good, like जैसे राज and DK, they are famous for their OTT shows and all those things, good directors behind that, right? उसका मार्केटिंग फिर किस तरीके से होता है, बिकॉज यू हैव, लाइक, यू नो दैट पीपल,
You don't have to move people out of their houses and plan कि Correct. आप मूवी के लिए जाते हो तो you plan Correct. कि मैं अपने फ्रेंड से Correct. पूछूंगा Correct. 5-6 लोगों से. It's an event in India. Correct. 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 You don't have to create that kind of thing for OTT shows, majority of them. So उसका फिर किस तरीके से थोड़ा differently होता है? So there are two things, right? OTT marketing में sampling as a strategy works more than anything. Okay. Movie marketing में perception works. Why does sampling work in OTT marketing? Is because मैं आपको बोलूं कि यार से फैमिली मैन का एपिसोड 3 बहुत बढ़िया है यार, वो देखना. That is going to fall flat. Why the hell would you even see an episode 3? My only and only job is to get you to see episode 1 कि पहली 20 मिनट बस, बाकी तो कंटेंट दौड़ेगा. मैं क्यों, मतलब वो प्रमोट करने का लॉजिक ही नहीं है ना और कुछ. Correct. फिर तो कंटेंट की बात है. So the biggest thing which we want to drive in our OTT marketing is sampling. So that is what we focus on. Correct. Not the other way around. उसमें मैं परसेप्शन गेम नहीं खेल सकता हूँ क्योंकि OTT ने तो पिक्चर खरीद ली है. तो मुझे अभी उसका B2B सेल्स नहीं करना है. OTT मार्केटिंग इज 100% B2C. Fundamental difference between movie marketing and OTT marketing. Interesting. क्योंकि मूवी मार्केटिंग चालू होता है तब से मूवी बेचने निकले हैं हम. OTT मार्केटिंग में बेचने के बाद अपने पास आती है. True. क्योंकि OTT ने खरीद ली ना मूवी, तभी तो दिख रही है ना. Correct. मूवी को तो बेचनी है. हाँ. टीजर से लेके रिलीज के एक दिन पहले तक इनको बेचनी है पिक्चर. Correct. And there are some shows like कि कोहरा अभी आया on Netflix. It just garnered word of mouth. Like they were not कि ऐसे events हो रहे थे कि कोहरा की स्क्रीनिंग के लिए लोगों ने बोला, जैसे गन्स एंड गुलाब के लिए अभी हो रहा है, like House of Stone के लिए हो रहा है, आलिया भट्ट का there are some franchisee movies for OTT platforms as well, and there are some sleeper hits that just become out of nowhere they picked up the audiences. ऐसा सब कुछ होता है कि when the content is working for itself, the word of mouth itself, you still have to push it little bit more. उस टाइम पे फिर क्या किया जाता है, क्या होता है? I'm asking very basic question because these are my genuine curiosity, to be very honest. I'll give you one example. Great question. A show, I'm not too sure आपने देखा रहेगा कि नहीं, but for sure सुना रहेगा. It's called Scam 1992. हाँ, देखा है. हर्षद मेहता story. हाँ. Right? So we were the marketing digital marketing agency for the show. Right? So again, what we realized was people were binge watching the show. Right? तो उसमें दो अलग चीज की थी हमने. एक तो ऑफ कोर्स शो कंटेंट के बारे में बात किया था. हर्षद मेहता इन इटसेल्फ वाज एन आइकॉन. पीपल admired him, right? So we created cohorts of people who would love to follow or love to watch, and cohort wise marketing किया. कई बार मूवी में क्या होता है, one to all marketing होता है. इसमें हम cohort wise marketing करेंगे. जैसे एग्जांपल, अगर आपको स्टॉक्स पसंद है एंड हर्षद मेहता पसंद है तो आपको एक अलग टाइप का कंटेंट दिखाया जाएगा. किसी को स्टोरी लाइन पसंद है तो उसको वो दिखाया जाएगा. जिस हिसाब से कई बार थंबनेल स्ट्रैटेजी भी होती है. बहुत कॉमन है, आई एम श्योर 1000 यूट्यूब वीडियो देखे रहेंगे जिसमें नेटफ्लिक्स की थंबनेल स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, बाकी OTTs के थंबनेल स्ट्रैटेजी की बात करते हैं. देयर आर थंबनेल इंजीनियर्स. देयर ओनली एंड ओनली जॉब इज टू क्रिएट थंबनेल्स. थंबनेल्स ड्राइव सैम्पलिंग, राइट? आप और मैं अपना नेटफ्लिक्स अकाउंट खोलेंगे, मुझे और आपको कंप्लीट डिफरेंट सेट ऑफ थंबनेल्स दिखेंगे. करेक्ट, राइट? सो स्कैम 1992. तो वन ऑफ द थिंग्स वी रियलाइज्ड वाज म्यूजिक बहुत चल रहा था. तो Scam 1992 was one of the first few shows in the OTT ecosystem जिसमें म्यूजिक के लिए एक अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी. Right? We realized that's selling. Like practically we realized at our office 10 में से 4 जन के रिंगटोन में वो था Scam 1992 का सॉन्ग. I'm sure आपने भी देखा रहेगा in Friends and Family. Sure. Right? It suddenly became a rage. So we kind of made sure via the right shoulder content and surround sound. That means हमने बात नहीं की, हमने लोगों से बात करवाई. करेक्ट. टू क्रिएट बज एंड क्यूरियोसिटी अबाउट इट. हमने फोमो क्रिएट करवाया. फोमो लीड्स टू सैम्पलिंग. सैम्पलिंग इज द ऑब्जेक्टिव. करेक्ट. इंटरेस्टिंग. वाओ, दिस इज फैसिनेटिंग. मुझे आउट ऑफ नोवेयर एक क्वेश्चन ये आ रहा है बिकॉज यू आर द CEO ऑफ दिस कंपनी फ्रॉम लास्ट 11 years now. Congratulations for that. And belated happy birthday to you. Thank you. So you are
like as I said कि आप 11 साल से अभी हो CEO. There are some things because advertising industry is changing at a rapid pace. Correct. और वो होती ही रहती है. Like throughout the history we have seen that. How do you so there are learnings तो आपको करनी पड़ेगी. जैसे right now you said कि you are fundamentally curious about right now AI. But what are some of the things that you have unlearned in this journey? कि ये चला था मेरे लिए 2015 में, but अभी Shrenik, this is not working for me in 2020, so unlearn that thing. Because that's also a very important thing for a CEO as well कि आपके फिर वो biases पहले चले थे इसके लिए आ गए, वो भी नहीं चलने चाहिए. Correct. नहीं यार, so यार, a lot of things. So I'm again another thing aspect of my career I'm very fascinated with is Gen Z, right? Gen Z जिस हिसाब से बाई करता है वो एक अलग ही दुनिया है. एक एग्जांपल मैं देता हूँ. Couple of months back I had visited this expo called as All You Can Street. All You Can Street is a pure Gen Z expo, right? It had some concerts, it had a lot of stalls where लोग Gen Z clothes खरीद सकते थे. मैं जब एंटर कर रहा था बाहर एक बड़ा बैनर लगाया था that if you're not into streetwear, this is going to be a culture shock for you. It was a culture shock for me. I'll tell you how. अंदर गया मैं, राइट, घूम रहा हूँ, सब देख रहे हैं. प्रोबेबली मैं अकेला बंदा था वो पूरे एग्जीबिशन में. 50,000 स्क्वायर फीट का वेन्यू था, ठीक है. मैं अकेला बंदा होगा जो जीन्स में था. पहले तो जेन जी जीन्स नहीं पहनती है, तो अगर हम कोई डेनिम ब्रांड के साथ काम करते हैं तो दैट इज द फर्स्ट थिंग वी नीड टू ब्लडी अनलर्न. अप टू 26 साल वाले लोगों को जीन्स पसंद ही नहीं है. पहली बात. दूसरी बात, मैं एक स्टोर में गया, बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई उधर. मैं गया, मैंने कपड़े देखे. पहले तो अजीब कपड़े, वी लाइक प्लेन क्लोथ्स है, राइट. तो देख रहा हूँ, मुझे एक चीज थोड़ी पसंद आई. मैंने बोला यार इसमें मुझे मीडियम साइज चाहिए. करण जौहर की मूवीज में कैसे होता है, ऐसे ड्रामेटिक पॉज आ गया, सब मेरी तरफ देखने लगे, क्या हो रहा है. एंड मीडियम टी शर्ट चाहिए मुझे यार, उसमें क्या बड़ी बात है यार. Of course. So the what I realized is Gen Z doesn't shop as per size. They don't want globally accepted matrix and size norms and guardrails to define their choice of fashion. What are you saying? मुझे कुछ पसंद आया, अगर मैं Gen Z हूँ, मुझे कुछ पसंद आया तो मैं वो खरीदूंगा, भले वो मेरे से 2 साइज ज्यादा बड़ी हो. Small, large, medium will not define my choice of fashion. Now think of it, अगर हम फैशन मार्केट कर रहे हैं तो कितनी बड़ी इनसाइट. आप देखोगे Gen Z को अपने आजू बाजू, they are wearing loose clothes. क्यों? Because उनको वो कपड़े पसंद आए, size doesn't matter. Speaking to a brand there, they are like, boss, we have stopped writing size in our clothes. Imagine a tag on your clothes without the size. Like it doesn't matter for Gen Z. सोचिए आप. तो अगर मैं एक मार्केटर हूँ जो मैं फैशन ब्रांड मार्केट कर रहा हूँ और मुझे ये इनसाइट पता नहीं है, तो कैसे मैं बेच पाऊंगा Gen Z को. So what I unlearned, coming back to your question, is ये जो एक Gen Z, the beast which is there, the way they buy, the way they consume, the way they shop, is completely different from the way a Gen X, Gen Y would think. Let me give you another example. At White Rivers Media, one of the days, a year or two back, we hired a Gen Z person in our strategy in one of the teams. Right, day one, standard process होता है लैपटॉप देना, हर कंपनी में होता है, हमने भी दिया. This lady was like, मैं क्या करूँ लैपटॉप में? Like लैपटॉप पे पीपीटी बनाइएगा, लैपटॉप पे एक्सेल बनाइएगा. नहीं, मैं तो सब फोन पे करती हूँ. लाइक फोन पे आप बात कर सकते हो, फोन पे पीपीटी और एक्सेल, पीपीटी पे चलो एक बार बना लोगे कैनवा पे, एक्सेल कैसे बनाओगे? नहीं, मैं तो फोन पे ऑपरेट करती हूँ. आई हैड सीन हर flawlessly and fluidically swiping up the presentations to a screen and whatnot in a meeting. 100% of the presentations and Excel sheets and proposals were made on her phone, and that's what that lady was comfortable with. ये जनरेशन ने लैपटॉप स्किप कर दिया है. तो अभी आप लैपटॉप ब्रांड को कैसे मार्केट करोगे Gen Z को? सोचिए. तो ये सारी चीजें अनलर्न करनी पड़ती है.
हाँ, this is fascinating. ये सच में हो रहा है ये लैपटॉप वाला? यार तो अभी 100% तो मैं नहीं बोल हाँ, सकता, मतलब बट यार तो ये अच्छा ट्रेंड है. मैंने कुछ लोगों के साथ ये देखा है ऑलरेडी कि यार उनको पसंद ही नहीं है लैपटॉप पे काम करना. हाँ. So do you think कि iPad वाले हाँ, choices so the it laptop it can brands have to reinvent their product. See, understand. हाँ, फंडामेंटली 4 पीस बिकते हैं: प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन. ठीक है. प्रोडक्ट इज योर फर्स्ट गेटवे. correct. वही ठीक नहीं है तो मैं प्रमोशन कितना भी करूं, नहीं बिकने वाला. कोई बड़े खान की पिक्चर क्यों नहीं हो, प्रोडक्ट ठीक नहीं है, कंटेंट या स्क्रिप्ट ठीक नहीं है तो नहीं बिकेगी. किसी का भाई किसी का जान नहीं चलेगी. I can't comment. Sorry. हाँ, go on. I will not comment on हाँ, we will movies cut because this. yeah, but हाँ, तो picture whatever any movie you think about, right? Any Khan movie, script ठीक नहीं है, प्रोडक्ट ठीक नहीं है, कितना भी प्रमोशन करो नहीं बिकेगा. Correct. एंड अगर पता है कि प्रोडक्ट सही है तो स्केर्सिटी वाला प्रमोशन भी करो तो भी बिकेगा. पठान. Correct. Nice. See, you are talking very fundamentally about fundamentals of marketing. Correct. A lot of people don't get is social media marketing, digital marketing, जो influencer marketing. At the end of the day, it is marketing. In Any social media marketer who doesn't understand 4 P's of marketing and other fundamentals of marketing is not fit for the job. Correct. What are some of the, apart from 4 P's, what are some of the fundamental marketing things you should learn if you want to get into this marketing industry and do some amazing work? Yeah. Again, you have to be a curious marketer, right? Fundamentally, you have to ask the right questions. ठीक है. सारी थियरी भूल जाओ, वो थियरी आपको गूगल पे मिल जाएगी. बट आप अगर सही क्वेश्चन, द आर्ट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चंस should be a priority one. If you are a student watching this, learn and master the art of asking the right questions. If you can ask the right questions, the world is waiting to give you the right answers. Second, most important, feel free to cold call. Feel free to cold email. It's completely fine. Persistence is a key, right? You would, the best of the businesses have been converted because of cold calls. Best of the businesses have been converted because of cold emails, right? Even at White Rivers, and again, of course, across multiple businesses as well. So have the right persistence, right? To be curious, be very, very, very well informed. ठीक है. मतलब आपको कैसे समझा, अगर चलो मैं एक बहुत बढ़िया एक मेटाफर दिमाग में आ रहा है. हाँ. आपने कभी कोई एग्जाम दी है बचपन में जब आपको सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा पता नहीं था या पसंद नहीं था या व्हाटएवर, पता नहीं था. ठीक है. यू वुड हैव परफॉर्म्ड badly / miserably in that. What if I tell you that you had an option of an open book exam? जो सब्जेक्ट के बारे में आपको पता नहीं था, मैं उसको आपको ओपन बुक दे रहा हूँ, अभी आप इसको एक्सेल करो. कर पाओगे ना? So now think of it with power of information. Every meeting you do, every presentation you make, every client you bloody meet is a open book exam. तो उसमें आप कैसे फेल हो सकते हो? क्यों फेल होगे? आप पढ़ो ना उसके बारे में सब. आप उसके साथ बात करते करते भी तो उसके बारे में 4 चीज पढ़ सकते हो. पहले ही पढ़ के जाओ, प्रिपेयर करके जाओ. उसके बारे में every person you can read enough and more about that person on internet. Why can't you do the right research and go? So essentially anything and everything right now with the power of information is like an open book exam. Simple. Why would you fail? The only time you would fail is if you're lazy. बहुत तगड़ा आंसर दे रहे हो आप. I am enjoying this a lot. They're like very to the point answers and no bullshit. Liking it. I wanted to talk with you about leadership as well. और मेरा सबसे ऊपर उसमें ये चीज था कि this is a people business, right? And as a leader, every business is a people's business. Every business, but this is more of a people business where you handle all the thing. So, in my opinion, as a leader, your decisions multiply. It is just not valid to you. कि श्रेनिक ने एक डिसीजन ले लिया तो मेरे ऊपर नहीं है.
अगर वाइट रिवर्स मीडिया में 400 प्लस पीपल काम कर रहे हैं, it will trickle down to them as well. So how do you take decision now, and what are some of the frameworks you have used in the past, and how your framework has evolved या तो एक as फ्रेमवर्क, the your team grows? फेयर एनफ, तो एक फ्रेमवर्क ना हम बहुत बहुत ऐसे बहुत डेडिकेशन से फॉलो करते हैं, उसका नाम है फेल फास्ट। Correct. ठीक है, फेल फास्ट फॉर पीपल हु डोंट नो, फेल फास्ट इज सिंपल। आप 100 दिन लगाओगे सोचने में, ठीक है, और सोचते रहोगे तब तक अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, राइट। सो फेल फास्ट होता है बहुत सिंपल कि यार शॉर्ट एक्सपेरिमेंट करो, चला तो उसको बढ़ा दो, नहीं चला तो फेल फास्ट इन इट एंड मूव ऑन। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इन आवर लीडरशिप टीम। पहली बात। So let me actually pivot the question to a few values which are there in White Rivers, right? Uh, Another value which is there outside of fail fast is uh, we love to pay it forward. Sorry? We love to pay it forward. Correct. Now what is pay it forward? Let me de-jargonize it. Pay it forward ये होता है यार कि मैंने आपके लिए कुछ आपको हेल्प किया without expecting anything in return. मैंने genuine intention से आपको हेल्प किया with the hope कि आप लाइफ में और किसी को ऐसे हेल्प करोगे। Pay it forward is a very important value within White Rivers Media ecosystem. ठीक है, तो on a routine day you would see कि यार अगर डिजाइन टीम का कोई बंदा बैठा हुआ है, उसको बहुत काम है, 9 बज गए रात को, उसके आजू बाजू वाले 3 डिजाइनर बोलेंगे यार तेरे को काम है ना 2 घंटे का, हम सब मिलके करते हैं, आधे घंटा सबका मैनेज जाएगा, सब खत्म कर लेंगे। हाँ. You would see it being practiced across the floor every single day, not just late working but across, right? So we strongly believe in pay it forward, right? So that's another, you can call it framework, you can call it value or a guardrail which is there. And third, I have realized in life you have to be a selfless giver, ठीक है, be it personal / professional life, ठीक है, स्पेशली पर्सनल लाइफ में, राइट। कोई भी रिलेशनशिप में ना, अगेन प्रोफेशनल पर्सनल जो भी है, अगर आप वो रिलेशनशिप में हो तो अंडरस्टैंड कि आप इससे क्या लेके जा सकते हो, तो रिलेशन हमेशा कम ट्रांजैक्शनल होगा और शॉर्ट टर्म होगा। कोई भी रिलेशनशिप में आप ये सोचोगे, अगेन पर्सनल प्रोफेशनल, कि व्हाट कैन यू गिव टू दैट टू मेक इट बेटर, तो वो रिलेशन हमेशा लंबा चलेगा, राइट। So giving as a nature is a strong value we imbibe as an organization, right? We are a giver, right? That's why we have something like a leave bank, right? It's one of the most tangible, practices which falls under giving as being a giver as a framework. Now, what I mean by leave bank is, say साल खत्म हो रहा है, मेरे पास 20 छुट्टी पड़ी है, right? तो मैं बोल सकता है यार 20 तो मैं कभी यूज नहीं करने वाला हूँ, लेट मी पुट 2 इन द लीव बैंक, ठीक है, ताकि अगर से उत्सव को या किसी और को 20 छुट्टी और लेनी पड़ी और उसके पास सिर्फ 15 है, तो मेरी 2 जो मैंने बैंक में दी उसको यूज कर सकता है। Interesting. Yeah, so we do things like that. So you know, as a people first organization, here we strongly believe people, our team is our everything, right? Clients आएंगे, right? We respect it of course, but लोग सब कुछ है, right? तो मैंने अगर उनको संभाल लिया तो वो मेरे क्लाइंट्स को संभाल लेंगे, very clear of that. Correct. So And did I divulge a lot from your question? No, you are not. And from your answer only, कि जैसे आपने बोला कि giving culture, and Correct. these are some of the values you have. What do you think when organization grows, कितने वैल्यू जो एक लीडर के है वो उसमें होने चाहिए, और कितने वैल्यू जो जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो रहा है, द काइंड ऑफ डाइवर्स टीम्स आई हैव, डाइवर्स पीपल आई हैव, तो उनके हिसाब से मुझे थोड़ा कल्चर को मोल्ड करना पड़ेगा, तो वो किस तरीके का एक सेट ऑफ बैलेंस होगा? बिकॉज आई नो कि there has to be some ethos which leaders
believe in. Correct. जिस तरीके से you believe in being the most and Correct. not like कि great या तो फिर मुझे बहुत great काम करना है, because it is very subjective. नहीं, तो मैं थोड़ा I will also speak about being the most and then I will go to this as well. Correct. हाँ. Yeah, so another fundamental belief of people in white reverse media is we don't work towards being the best. Being the best is a great byproduct to have. I will always and only aspire to be the most. Difference मैं बताता हूँ, थोड़ा अनजार्गनाइज करता हूँ. हाँ. ठीक है. Be the best मतलब क्या है? मेरे को क्लास में बेस्ट बनना है, मेरे को क्लास में फर्स्ट रैंक आनी है. उसका मीनिंग ये है कि मेरे को आपके आजू बाजू वाले बाकी सारे लोगों से ज्यादा मार्क्स लेके आने. दैट मीन्स आई एम फाइटिंग एन अननोन. क्योंकि आपका कैलिबर मुझसे ज्यादा हो सकता है, मुझे नहीं पता है, पर मुझे अपना तो कैलिबर पता है. सो व्हेन आई फाइट एन अननोन, there is a fear of unknown which leads to mental health issues, which leads to pressure. So what we tell people is you be your most. That means आप सामने वाले को नहीं जानते, आप इकोसिस्टम को प्रोबेबली नहीं जानते, पर आप खुद को तो जानते हो. करेक्ट. तो आपको तो पता है आपकी क्या कैपेसिटी है. तो यू बी द मोस्ट यू कैन बी. मोस्ट बनते बनते बेस्ट बन गए तो मजा आ जाएगा, पर बेस्ट बनने के लिए एस्पायर करोगे तो 100 प्रॉब्लम होगी. So that's a strong value, a strong guardrail we have at White Reverse Media. Right. Coming back to what values of team, I think the answer is the day a CEO feels that he knows it all is the day degrowth of the organization starts. Correct. In fact, a CEO should always feel that he is a student all his life. सीखते रहना चाहिए. Right? मुझे अगर लगे कि यार मेरी एक वैल्यू से आपकी कोई वैल्यू ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो I should be the first one to adopt it. Right? So the answer to it is, for the greater good, if it makes sense, it has to be adopted. Simple. Right? You should not wait. There's never going to be a right time. There's never going to be a wrong time. You should not wait. If you think a value which is there in the team supersedes the value you have, and if the logistics fit right, you should adopt it. Correct. Very interesting. और जो ये वर्क कल्चर होता है when people are working on a project or anything, so I did a podcast with one entrepreneur and उनके organization में Binny Bansal is an investor. So Binny Bansal taught him very cool concept about productivity बढ़ानी है. He's a very focused person. So he said about Binny Bansal, like Binny is very sharp focused, and he said him one of the things ki there's a thing called activity versus progress. You have to remind your team that you should be doing tasks which will make progress and not just activity जहाँ पे आप ऊपर से feel करो कि I'm being productive. Correct. Right? So for that, what you guys are doing here, या तो फिर what are some of the things you believe in कि जहाँ पे productivity बढ़ती रहे, because people are, I suppose कि people are working on multiple projects और correct. creative productivity measure करना ही बहुत difficult हो जाता है. So how they should like effectively creative वो हो सके, उसके लिए what are some of the practices you guys do? Great question. So one of the things which we have another as a value is optimization. Now what do I mean by optimization is basically agar if you think there is a room to optimize, you need to optimize. If you think there is no room to optimize, move on. Right? So that is one of the value we've adopted. We strongly believe in the value of time and value of money. With every single ounce of respect to money, we understand that the value of money can be measured in quantity, which means पैसों की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बट अगर हम क्वांटिटी में मेजर करें, अगर आपकी सोशल स्टैंडिंग है, आपने सही काम किया है लाइफ में, तो पैसों की वैल्यू है 10 से 12% ब्याज. With lot of respect to money, I'm not telling with any kind of a disrespect to money. But you are right. But time की वैल्यू क्या है? Priceless. बराबर है. So one has to understand the value of time versus value of money. Very important. तो आपको लगता है कि
ये हम प्रैक्टिकली कैसे डालें. तो अगर मुझे लग रहा है कि यार मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जिसमें मुझे जितने पैसे मिले उससे कहीं ज़्यादा टाइम मैं स्पेंड कर रहा हूँ, तो मैं ऑप्टिमलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए बोलूँगा कि बॉस इससे ऊपर मैं नहीं करूँगा, या उसका कुछ सोल्यूशन वर्कआउट करें. अगर मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर कोई प्रोजेक्ट है, वो मैं इट इज़ बेटर given away to someone or given to a junior resource or given to a senior resource for multiple other things, respecting the time, then I should do that. So we should understand the value of time, we should understand the value of money and play it right. करेक्ट करेक्ट. एंड एज ए सीईओ मैंने बहुत सारे जैसे जगहों पे एजेंसी कल्चर के अंदर देखा हुआ है कि मेन लीडर गोज इनटू द निटी-ग्रिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अ लॉट, कि वो क्रिएटिव डिसीजन में चला जाएगा, कुछ इस तरीके से बात करेगा, इस तरीके से बात करेगा, जहाँ पे हिज वर्क इज टू हैव अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. करेक्ट. सो हाउ डू यू लाइक आप किस तरीके से ये एंश्योर करते हो कि यू ऑलवेज हैव अ बर्ड्स आई व्यू ऑपरेशन, एंड फॉर निटी ग्रिटी यू हैव राइट पीपल हायर्ड इन योर टीम एंड दे विल टेक केयर ऑफ इट, बिकॉज दैट्स व्हाई यू हायर्ड देम. अगर मैं क्रिएटिव डायरेक्टर के पास जाके बोल रहा हूँ कि ये वाला तू मत कर, ये वाला आई एम स्पेंडिंग माई टाइम देयर, देन व्हाई यू हायर्ड दैट पर्सन इन द फर्स्ट प्लेस. करेक्ट. सो हाउ डू यू एंश्योर दैट आप जूम आउट रह के आपको बर्ड्स आई व्यू ऐसे मिलता रहे, स्पेशली एज ए सीईओ? Good question. So we again, power of people, right? We onboarded this gentleman by the name Saurabh. Saurabh is someone we've onboarded as a consulting CHRO. Comes with the, I always tell my team, when at times people ask logic and reasoning for some decisions or some rules which or some policies which I implemented. I tell कि यार भाई आपका जो एज आपका जो एज है उससे ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है. So so we hired a lot of hired people like him who've got us the right gray hair on the table, so to say, and incredible amount of experience, incredible amount of intelligence, right? So we got him onboarded about 2.5-3 years back, right? Which was also the point of our inflection in terms of growth. COVID के पहले हम about 100 जन की टीम थे, अभी 500 टच कर रहे हैं, right? So ये growth रहा है हमारा पिछले कुछ सालों में. तो हमें at right point, again because of the being around at the right place at the right time, we could quite connected to him. He was gracious enough to accept the offer and get onboarded. He came in, set the right processes, set the right KRA, set the right hierarchies. So across the ecosystem of White Rivers Media, there are clear, well-defined KRAs. We have a very strong people and culture team led by this lady called Lizandra Pinto. She's been around for more than 9 years, right? So we have very clear KRAs, very clear KPIs. Sorry, KRAs मतलब? KRAs मतलब key responsibility areas, KPI मतलब key performance indicators. दो अलग चीज होती है. कई बार लोग आप समझा दो, ये समझा देते हैं. की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया मतलब क्या, कि तुम्हें काम क्या करना है. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर मतलब तुम्हारा काम किस हिसाब से जज किया जाएगा. तो तुम्हें काम करना है सेल्स का, अगर आप सेल्स में हो तुम्हें जज किया जाएगा कि केपीआई रहेगा कितने का धंधा लाए. करेक्ट. वेरी सिंपल. तो और हमने क्या किया ना, ज्ञान अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन ज्ञान कट करते हैं, ज्ञान रखते नहीं, राइट. तो 3 लाइन का केआर है, 3 लाइन का केपीआई है. सिंपल. 100 पेज का कुछ केआर है, केपीआई नहीं है उसमें. लोग ज्ञान होता है. सिंपल 3 लाइन्स ऑफ what should be the key responsibilities, what should be the key performance indicators. You define that across level, from a CEO up to from an intern all the way up to CEO. That is well defined, right? So that's why सबको अपने अपने काम पता है. और हमने उस हिसाब से एक हायरार्की बनाया है कि less than 9 people, like I try to keep it single digit. Like I said, about 480 people की टीम है. Single digit number of people report to me. Always. There'll be 40, 50, 100 people reporting to each of them. Right? So I'm that disconnected with operations. Wow. Right? All my job is to have strategic conversations, bird's eye conversations, reports, one-on-ones with the leaders, one-on-one with superstar performers in the team.
and strategically drive the organization forward. As of right now, of the say 100 tasks which I might do in a month, less than 5 tasks would be operational. So it is that much of a non-operational role. Wow, this is crazy. So the thing you Which said, gives me the mind space and leeway to leave the phone for an hour while we are having a conversation. Correct. Nice. I just want to ask you this. Now, it's a very interesting point because you said कि तुम आपका ऑर्गेनाइजेशन 3x ग्रोथ हो रहा है, करेक्ट? कोविड तक आपके पास 100 की टीम थी, अभी 40 जितने आने वाले अराउंड. Correct. So, do you think when organization grows faster than people, let's say कि वो 100 लोग जो काम कर रहे थे वो थे तभी, suddenly the organization का कर्व ऊपर चला गया, correct? So, जब ये growth हो रहा है, तब they should know कि this is where we are heading and now this is our plan. So ये वाली चीज है. So I'm asking कि when organization is growing faster than people, how do you ensure कि एक culture बना रहे तब भी? एक word में आंसर करूं. Correct. Conversations. Wow. Don't shy away from easy, very easy, tough, very tough, or very very tough conversations. Entrepreneurs कई बार क्या करते हैं ना, procrastinate करते हैं tough conversations. True. वो tough बन जाता है very tough बन जाता है very very tough. ठीक है? Tough conversation तो सबसे पहले करके खत्म करना चाहिए before it becomes very tough. Right? So as an entrepreneur, you should never procrastinate your conversation first. Second, keep your team abreast with your growth plans. आप अकेले grow करोगे तो team would feel left out. Team would feel they're being lost in the ocean. So grow with the team. Genuinely give them enough and more opportunities to grow together. I think that's a success. That's the secret sauce. Right. And what's the cost of success? Because आपने ऐसे ही तो नहीं बनाई इतनी बड़ी कंपनी. There must have been some sacrifices and cost that you have given. Cost से ज़्यादा ना यार. So you lose out on your social circle a lot because you would develop newer social circles, of course. But कई बार ये होता है कि यार I've been hearing a lot of times friends say कि यार मुझे लगा आप बिजी हो गए इसलिए आपको फोन नहीं किया. एंड मन में लगता है यार नहीं यार मजा आता है यार कॉल करता रहा. So, a lot of those things happen where they genuinely care about us and don't want to disturb us and hence don't call. Right? So that is one of the biggest cost of success, I would not say we are successful. We are on the pathway to the same. It's always a work in progress. But I think you compromise on the relationships, right? Generally personal. Most often friends. क्योंकि आप घर वालों से तो टच में रहोगे क्योंकि साथ में रहते हो अगर आप साथ में रह रहे हो, राइट? बट फ्रेंड से कई बार आप कन्वर्सेशन को डी प्रायोरिटाइज कर देते हो. लाइक इफ यू वर टू आस्क मी कि यार श्रेनिक आप अगर 2015 में वापस आओ या 2012 में वापस आओ तो एक चीज क्या चेंज करोगे अपने लाइफ की? आई वुड बी मोर इन टच विद फ्रेंड्स, राइट? दैट इज वन थिंग व्हिच आई हैव लर्नड कि यार एंड मतलब I think that is one thing which most entrepreneurs miss out on, right? And which now I'm actively changing, of course. Right. So because it does not. कई बार क्या होता है प्रायोरिटी होती है ना यार. आपको पता है कि यार अगर सिर्फ बिजनेस टारगेट नहीं है मुझे 100 जन की सैलरी देनी है. कई बार सोशल एंड मॉरल ऑब्लिगेशंस होते हैं तो आप क्या करोगे, राइट? बट देन ऑफ कोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कम आउट ऑफ इट एंड व्हेन realize कि at the right time you need to be in touch with the right friends because काम आएगा काम जाएगा. Your relationships will stay. So ये मुझे वो लाइन याद आ गई आखिर खान की तथास्तु में से कि प्रोफेशनल लॉसेस आर टेम्पररी बट परमानेंट लॉस. I remember उसमें उन्होंने बोला था कि यार आप ऑफिस में अगर गॉड फॉरबिड समवन एक्सपायर्स 2 दिन लोग बुरा मानेंगे, तीसरे दिन उसके जॉब उसकी सीट की वैकेंसी लग जाएगी. Correct. आपके घर वाले वो थोड़ी कर पाएंगे आपके लिए. या आपके दोस्त तो कभी नहीं कर पाएंगे. True.
somehow I feel कि CEOs has to be detached as well, right? Correct. Detached to? Detached to like emotional stimuli and emotional responses, because emotions will not guide you always all the time in the right direction, because वो जैसा आपने बोला कि tough, very tough हो जाएगा, very tough, very very tough हो जाएगा because of emotions. Correct. Because of emotions we delay things. When you, how hard was for you to develop this kind of a thick skin? Thick skin. यार तो यार so अब यार महीने के एंड में ना सैलरी का बिल भरना है, लाइट और रेंट का बिल भरना है, तो आपको थिक स्किन बन जाती है। तो वो सिचुएशंस बना देते हैं, राइट? जब कोविड जैसी कुछ चीज आ जाए, राइट? जब सो यू नो व्हेन कोविड स्टार्टेड, राइट, आई रिमेम्बर 23 मार्च से 31 मार्च तक, लाइक ऐसे तब एक 100 जन की टीम थी, ठीक है, एक सर्टन स्केल का धंधा था, 55-60% धंधा वो 6 दिन में चला गया। Wow, what I was saying. I was scared to pick up phones कि भाई साला एक और कोई क्लाइंट फोन करेगा, वो बोलेगा यार बिजनेस बंद करो अपना, यू नो, कि हमारे साथ हमारा रिटेनर बंद करो, राइट? So of course we rebuilt the whole thing and we've grown what we've grown, but then ऐसे situations आ जाते हैं तो thick skin बन जाती है, right? We have no option but to build that. Yeah, correct. फन क्वेश्चन पूछो अभी आपको। हाँ यार, बहुत आपको ज़्यादा कौन सा खान emotional हो गया। हाँ, आपको कौन सा खान पसंद है? मुझे शाहरुख खान, I respect him as a, while I am a fan of him as an actor, I have massive respect for him as an entrepreneur. Massive respect for him as an entrepreneur. There is a little bit backstory about my love for Shahrukh Khan. My family was not a big fan of Shahrukh Khan. All growing up, I used to watch all the Akshay Kumar movies in the theaters. So I have a very deep connection with Akshay Kumar. Like वो childhood hero है मेरा. Correct. But मैंने शाहरुख खान की बहुत कम पिक्चर देखी थी, लाइक क्लासिक्स। अभी तक आप मुझे बोलोगे आई हैव नॉट सीन DDLJ, आई हैव नॉट सीन डर, आई हैव नॉट सो मेनी मूवी। कुछ होता है मैंने बिट्स एंड पीसेस में देखी हुई है। Correct. आई जस्ट रिसेंटली वॉच कभी खुशी कभी गम 6 months बैक। तो मेरा बहुत कनेक्शन नहीं था, बट देन आई कम टू कॉलेज, मैं उनके थोड़े इंटरव्यूज देखने लगा। द वे ही टॉक्स, द वे ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ, द वे ही आर्टिकुलेट विटी थॉट्स, वो सब पसंद आ लगा कहीं ना कहीं पे। देन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट his entrepreneurial journey, how he built Red Chilies, how he's doing with KKR right now. KKR is such a huge thing. So I read this very interesting story about him, about KKR. He was about to sell KKR. He said this in his Google talk ऐसा कुछ, but he said कि रुक जाते हैं कुछ. So like because first 3 years they performed really badly in IPL. So after he was like कि बहुत पैसा जा रहा है इसके अंदर, क्रिकेट के अंदर, रहने देते हैं ऐसा कुछ भी करके। Suddenly he waited कि कुछ रहते and then 2-3 years he gave कि दे देते हैं, and in that 3-4 years they won just 2 titles in that, and suddenly the boom happened. जो famous line है उसकी कि when you're about to quit, that's when the miracle kind of happens, कि आपको push करना पड़ेगा, because you will never know कि कब वो किस्मत चमकेगी. Like don't give up very easily as well. Correct? Because in your case as well, 11 years, in my opinion, leading like now 2-3 years, 480 team plus members is very huge. As an independent agency is a very huge thing to, because people who join the advertising agency kind of their age is very young, and at that age, like I'm also 2024. So our goal is कि growth किस तरीके से हम लोग optimize करें. That is our main mindset. What's your age you said? 2024. Really? Wow. I thought you would be in your 30s. No. You ask a lot of deep questions. Thank you. But so our goal See, is that's what I was telling. Gen Z is crazy. But मैं अपने आप को मिलेनियल मानता हूँ, मुझे मालूम नहीं कि वो क्या 26 साल तक Gen Z कहलाते हैं। क्या बात है? हाँ, मतलब इस साल में 95 onwards is Gen Z. आप I'm sure 97 born, 98 born, 95 के beyond, 95 वाले cusp बोलते हैं. They are in the cusp of both millennial and Gen Z. 95 onwards is Gen Z. Interesting. 2010 के बाद अल्फा होता है. क्या बात है? हाँ. तो अल्फा जनरेशन तो अलग ही है. ठीक है, वो तो भाई.
So what I was saying is, अल्फा जनरेशन हाँ बताओ आप. सिंगल डिजिट एज में खुद की एंटरप्रेन्योरल बिजनेसेस बनाने लगेंगे, पता नहीं चलेगा. Say. तो वो तो भाई आई नो फॉर अ फैक्ट देयर इज अ स्कूल इन बॉम्बे, हाँ. उसमें 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए उन्होंने एक मिनी शार्क टैंक टाइप का पिच ऑर्गेनाइज किया था. बच्चों को फंडिंग वंडिंग मिल गई थी. 8th स्टैंडर्ड क्या होता है, 13 साल की उम्र. Crazy. Yeah. So what I, Sorry, we हाँ 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 नहीं नहीं नहीं. So what I was saying कि contradicting views पे कुछ थे आप. हाँ, so not contradicting views. मुझे मेरा ऐसा था कि 2024 के एज के ऊपर we optimize for growth. Correct? Money is also needed, but अगर I know कि my family is little bit settled down ऐसा कुछ, तो I will optimize for growth rather than money. Correct? How do you ensure when people are joining in advertising agency and all those things, they want to grow as well. Constantly they want to see कि मेरा growth दिख रहा है मुझे, I am constantly improving my skills and all those things. क्योंकि अगर मुझे ग्रोथ मिलता रहेगा, ऐसा कुछ मिलता रहेगा, आई विल स्टिक टू योर ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज आई नो यू वैल्यू माई ग्रोथ एज वेल. सो बिकॉज वो किस तरीके से आप लोग एंश्योर करते हो कि या तो फिर कल्चर में ऐसा डाल दिया है कि वो बाय प्रोडक्ट आपको ग्रोथ दिखने ही लगेगा कि बाय उत्सव तू इतने इतने करेगा, यू विल सी योर ग्रोथ बाय वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन. So I used to work in Future Group before Drives Media. Yeah. बराबर. Future Group में जो है, there was this person by the name Mr. Devdutt Patnaik. Have you heard about him? He was the chief belief officer of Future Group. He is the writer as well of the books and all those Correct. things. Correct. Correct. I know him. Right. So I learned a very interesting thing from him. It's the formula of LSD. Okay. Gen Z, don't take LSD in a separate way. What I mean is Lakshmi, Saraswati, Durga. Right. What I mean by that is, as an entrepreneur, okay, one has to understand, and again, for all fellow entrepreneurs listening to this, you have to understand the importance of all three, Lakshmi, Saraswati, and Durga. At what point of time, to which employee you're offering what makes a lot of difference. Jaise, fundamentally, what I've realized is for people who are decently well settled at home, up to 28, 30, सरस्वती makes more sense than लक्ष्मी. 30 से 35 या 28 से 35 तक लक्ष्मी makes a lot more sense than सरस्वती, because आपने enough knowledge accumulate कर लिया है, अभी आपको पैसे कमाने हैं. 35 के बाद आपने enough knowledge accumulate कर लिया था, आपने enough पैसे कमा लिए हैं, अभी दुर्गा, which is the goddess of respect. So goddess of knowledge, goddess of money, and goddess of respect. At the right age of your life or the right juncture of your life, you have to, as a person on the other side who's taking a salary, an employee should have the right Lakshmi, Saraswati and Durga phases of life. As an entrepreneur, ठीक है, if you also divide it micro way में, ठीक है, तो आपके अप्रेजल के टाइम पे मैं आपसे सरस्वती का बात करूं तो आपको पसंद नहीं आएगा. आपके अप्रेजल के बाद टाइम पे मुझे आपसे लक्ष्मी एंड दुर्गा की बात करनी है. अप्रेजल के बाद मुझे आपसे सरस्वती की बात करनी है, ताकि नेक्स्ट अप्रेजल में आपका लक्ष्मी और दुर्गा बेटर हो. Wow. So that's how you manage growth of employees. Hmm. So that is something we. Too deep an answer? No. This is a very good answer. I want to say, आप कितना डील क्लोज करते हो सेल्स के अंदर? ऊपर बता सकते हो? Because you are giving very fantastic answers. Come on, like this kind of articulation of thoughts, या तो फिर इतने crisp answer, इतने छोटे like 2-3 lines के अंदर आप इतना deep बोल जाते हो. This is this kind of thing people can do who are writers, I believe, और who are salespersons. कि उनका आर्टिकुलेशन ऑफ थॉट बहुत अच्छा होता है. यार सुबह इसमें मेरा पर्सपेक्टिव ये है, हाँ, दुनिया में हर इंसान सेल्समैन है. हाँ, ठीक है, अगर कोई इंसान बोले मैं सेल्समैन नहीं हूँ तो झूठ बोल रहा है या अपने प्रोफेशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है. ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा इंसान, सबसे रिचेस्ट इंसान गाड़ियां बेचता है और अलग अलग गवर्नमेंट को बोलता है मेरी गाड़ी का प्रोडक्शन चालू करने दो. ही डज हिज सेल्स. अ बेगर ऑन द स्ट्रीट डज सेल्स. सो ये पूरे स्पेक्ट्रम में जितने लोग हैं सेल्स करते हैं. ठीक है, तो फंडामेंटली चलो मैं और थोड़ा इसको ब्रेक डाउन करता हूँ. मैंने किसी से सीखा था ये रिसेंटली. ये जो आईटी एज है, जो भी पिछले कुछ 20 एक साल से चल रहा है, उसमें या तो आप कोडर होने चाहिए या सेल्समैन होने चाहिए. करेक्ट. ठीक है, ये दोनों में से एक नहीं हो तो आप नहीं बिक पाओगे.
By big पाओगे I mean you will not be employable or you would not be able to become an entrepreneur, right? आप coder and salesman दोनों हो तो चांदी है, correct? So that is what I've learned, and fundamentally everyone has to think like a salesman. Every single thing. A copywriter is selling his copies, an artist is selling his art, a business development guy is selling his business whatever deals. So fundamentally you have to think like a salesman. So that is my perspective to sales. Correct. Every single person has to think sales. Interesting. बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. आप मुझे बताओ अभी और कौन से टॉपिक के ऊपर बात करनी है? यार Like we have- फन का एक क्वेश्चन पूछ के फन क्वेश्चन नहीं पूछा है, इतना डीप एंड हाँ. इमोशनल पॉडकास्ट बना दिया यार. चलो ये बातें करते हैं. कहाँ जगह पे आपके घूमने जाना है आपको इस साल में? लाइक व्हाट्स योर विश लिस्ट? आपको ऐसा है कि you want to attend concerts? यार विश लिस्ट में आपके क्या क्या चीज है वो मुझे यार, बताओ. जैसे मेरे विश लिस्ट में वन ऑफ द थिंग इज आई वांट टू वॉच माय फर्स्ट क्रिकेट मैच एट एमसीजी, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड एशेस. that's my one of the my highest wish list, and I want to attend Coldplay का कॉन्सर्ट. आपका क्या है? इंटरेस्टिंग. कोल्डप्ले आ रहा है मलेशिया बैंकॉक में आ रहा है फरवरी में. हाँ, राइट, यू शुड अटेंड. हाँ, बिग गया टिकट सोल्ड आउट है, अभी नहीं मिलेगा. ओके तो लो. ठीक है. So यार I have a different thing over here यार. So I while of course there are materialistic plans, right? जैसे a certain place I want to go as soon as a certain milestone is achieved. But more importantly, वो तो जब होगा तब होगा, right? But more importantly, I believe in spending time with the right people, right? So my holiday aspirations are not geography driven, because decent number of geographies and countries देख ली है, हाँ, right? I would rather have an aspiration कि यार मैं ये फैमिली मेंबर या ये सेट ऑफ फैमिली मेंबर्स एंड ये सेट ऑफ फ्रेंड्स के साथ इतनी ट्रिप्स करूंगा या इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगा. दैट इज हाउ आई डिफाइन माय एस्पिरेशन स्लैश हॉलिडे टारगेट्स. करेक्ट. क्योंकि यार खैर ऑफ कोर्स ट्रैवल, नो हु डजंट लाइक ट्रैवल, बट आई थिंक व्हाट इज मोर प्रेशियस is the non-materialistic things which are there, which is spending time with people, right? So I would rather spend the right time with the right set of people. करेक्ट. और मुझे एक ऐसा फन क्वेश्चन आ रहा है बिकॉज वी टॉक्ड अ लॉट अबाउट मूवी. आप किस तरीके से इंसान, आपको इमेजेस याद रहती है कि आपको डायलॉग्स और वर्ड्स याद रहते हैं? वर्ड्स याद रहते हैं. वर्ड्स याद रहते हैं. वर्ड्स याद रहते हैं. डन. बिकॉज आई चेहरे भूल जाते हैं यार. हाँ. मुझे वो फ्रेम्स और वो सब ठीक है. लाइक पीपल फैंटेसाइज अ लॉट अबाउट दैट, बट आई फैंटेसाइज अ लॉट अबाउट डायलॉग्स एंड अदर थिंग्स. लाइक ओपनहाइमर के अंदर there's a dialogue, genius does not mean wisdom. मैं तो उधर ही मैंने बोला वाव. करेक्ट. इतना जोर से मैंने वाव बोला था थिएटर के अंदर. करेक्ट. क्या बोल दिया ये. करेक्ट. बढ़िया. यार आपके पास अगर वर्ड्स को आर्टिकुलेशन करने का सुपर पावर है तो आप काफी बैटल जीत सकते हो. Yeah. Right? You could win the war of words. मुझे इसी की वजह से आई लाइक लिरिक्स अ लॉट. Okay. बिकॉज मुझे लगता है कि सिंगर्स भी गाते हैं बट वर्ड्स किसने दिए. लाइक जैसे कि मुझे एक सॉन्ग बहुत पसंद है तुम तक रांझना का, जिसमें एक वर्स आता है कि नैनो की दार है नैनो की नैया, कैसे मैं पार करूं तू ही भंवर है. लाइक आई वाज लाइक कि इरशाद कामिल क्या लिखते हो भाई तुम. जैसे कागर कागर मोरी है. करेक्ट. यू नो द मीनिंग ऑफ इट? नो टेल मी. सो कागर कागर मोरी चुन चुन खाइयो मांस, उसमें ये आता है. सो ही सेइंग कि मतलब जो क्रो होता है, लाइक इट इज नोन कि जो श्राद्ध और वो सब के. सो ही सेइंग कि मेरे बॉडी के सारे पार्ट्स खा जाना, सब कुछ चुन चुन खा जाना, बट मेरी आंखें मत खाना, क्योंकि मैंने उसको देखा है. क्योंकि मुझे मेरी प्रेमिका को देखना है. वाओ. That was the meaning of the कागर कागर. I never knew this. Wow. Yeah. And when one of my friends said that, अभी भी मुझे goosebumps आ रहे हैं वो सुन के. But that's the so thing. nice, yeah. So nice. तो तब like I have a very good fascination with words, dialogues और वो सब मुझे काफी. Which is your favorite Bollywood dialogue? Interesting. Favorite Bollywood dialogue will be
ऐसे तो मुझे अक्षय कुमार मूवीज पसंद है, तो मुझे तो मेरे मतलब फनी फेवरेट वाले बॉलीवुड मूवी कौन सा है? मेरा फेवरेट बॉलीवुड मूवी रॉकस्टार है. रॉकस्टार. Yeah, it came at an age where I was transitioning into teenage, नाइस. where I was having that, teenage में आपका hormones change होते हैं, Correct. attraction आपको आता है, वो सब आता है. तब मुझे पता नहीं चला, but after 1 year I saw, like it's just a deep connection I felt, and I have a very emotional connection with that movie. Nice. And the songs, of course. Of course. Songs तो Yeah. वही. आपकी कौन सी favorite movie है? Yeah, so interestingly, while of course the sad part about movie marketing and the bloody saddest part about movie marketing is हम हर पिक्चर रिलीज होने के 4 महीने पहले देखते हैं. जब पिक्चर, अगर आप 2.5 घंटे की पिक्चर थिएटर में देखोगे, हमने जो पिक्चर देखी रहेगी वो 4-4.5 घंटे की रहेगी, अनएडिटेड रहेगी, अनफिनिश्ड रहेगी, क्योंकि हमें देखनी पड़ती है. हाँ. So most movies we see it like that on a working day, right? In this room we've seen many movies like that, and I've seen a movie which is going to come in the month of December. I'm not going to tell you which. It is going to Merry Christmas. मैं guess करूँ? Can't tell you ठीक that. है. हाँ. But पागल कर देगी लोगों को. I'll tell you after the podcast. And maybe वो जब पिक्चर आएगी मैं पॉडकास्ट पे जाके कमेंट करूंगा, ये पिक्चर की बात कर रहा था मैं, right? But so coming back, so for work we see all types of movies, whatever we have to market, right? And we see very long unedited, unfinished, जिसमें लाइट नहीं हुआ है, एडिटिंग नहीं हुआ है, काफी unfinished versions of movies, right? तो वो चीज से इतना fascination नहीं है. Like I mentioned sometime back, escapism. So I love unintelligent movies. क्योंकि सोमवार से शुक्रवार काफी दिमाग लगा देते हैं इसमें. तो शनिवार और रविवार में हाउसफुल 4 जैसी मूवीज देखने में, स्लैपस्टिक देखने में मजा आता है. Correct. Right, that's my choice of movies, and I think enough and more time अपन दिमाग लगाते हैं मूवीज पे. तो शनिवार को पैसे देके दिमाग नहीं लगाना. मूवी में दिमाग लगाएंगे तो पैसे लेंगे. करेक्ट. आपको रॉकी और रानी कैसी लगी? यार मजा आया. क्लासिक करण जौहर. We've done some work for them as well, but मजा आया, बहुत मजा आया. True. Like larger than life, बकचोदी. वही. चल. Like I enjoyed after so many time a Bollywood movie. I enjoyed being in theater. अब जवान देखेगा, मजा आएगा. It's going to be beautiful. Like पठान भी मुझे तो बहुत मजा आ गया. पठान भी मस्त था. Like just for the love of SRK. Yeah. Now speaking about it, in fact, let me complete that point as well. Why I respect him as an entrepreneur. And again, of course, not many people would know this, but COVID time tha. I remember one of the first casualty as a movie of COVID was a movie called Kamyab. Fantastic movie, beautiful story. Sudhir Mishra did a fantastic job. छोटी सी पिक्चर थी, which was a ode to Bollywood and people working in Bollywood by Red Chillies. Right, हमने एक certain amount का काम किया था उनके लिए. कोविड डिक्लेयर हुआ, हमारा बिलिंग होने वाला मार्च 6 या मार्च 8 को मूवी आई थी. 20-22 तारीख को सारे अनाउंसमेंट हो गए थे बड़े वाले कि 3 हफ्ता बंद रहेंगे ना, राइट. And that was the phase when if you remember, I mentioned that a lot of clients were going away. मुझे कॉल आया रेड चिलीज से, एंड मैं बोला भाई शाहरुख भी जाएगा तो यार नहीं मजा आएगा कोविड में. तो कॉल वाज, I think the call made me the biggest fan of SRK as an entrepreneur, as an honest person, right? We got a call from the team saying कि यार वो पिक्चर की बिलिंग खत्म कर लो. भाई बिलिंग खत्म कर लो, I mean जो बिल हम मार्च 30 को रेज करने वाले थे या अप्रैल 2 को रेज करने वाले थे, क्योंकि हमें सपोर्टिंग इनवॉइसेस तभी आते थे, कोई से फेसबुक या गूगल या किधर से भी. वी वर रिक्वेस्टेड टू सेंड प्रोफोमा इनवॉइसेस इन एडवांस. लाइक प्रोसेस है यार आपका, तो आप पैसे लेके थोड़ी जाने वाले यार, आप तो इतने. सर वी गॉट स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस कि भाई कोविड टाइम आने वाला है, पूरा टाइम आने वाला है, हमें वेंडर्स को, पार्टनर्स को प्री पेमेंट करना है. So bill was not due, and we were paid money within 24 hours of me raising a pro forma invoice. बंदे की ethics देखो. Vis-a-vis another superstar, I'm not of course going to ever name that person. जिसका काम हमने कुछ 3 महीने पहले किया था, 3-6 महीने पहले whatever किया था, जिसकी मूवी बहुत हिट हो गई थी, उसके पैसे आज तक नहीं आए. वर्सेस ये बंदे ने, शाहरुख खान की टीम ने, एक मूवी जो नहीं चली
उसके पैसे प्रोएक्टिवली एडवांस में दे दिए. ये होता है फर्क. Have you met Shahrukh in person? Multiple times, yeah. बताओ वो स्टोरी बताओ. यार so what I've realized is यार उनके शूट में ना कैसा होता है पता है? हाँ. So he's a very good person. बहुत दिल से बहुत अच्छे बंदे हैं. Right? आप जब उनके शूट पे जाओगे ना, he will make sure everyone is well fed, everyone is comfortable. आपको ऐसा फीलिंग आएगा आप उनके घर पे हो. वो और उनकी टीम आपका इतना ध्यान रखेंगे. पहली बात. दूसरी बात, we were shooting for one of the largest influencer in the country. Right? एक 10 पेज की स्क्रिप्ट थी. बंदे ने कुछ 6-8 महीने लिखी थी वो स्क्रिप्ट. ठीक है. 10 पेज की स्क्रिप्ट थी. सर मल्टीपल शूट्स कर रहे थे, बैक टू बैक शूट्स हो रहे थे. वी वर देयर विद हिम फॉर द होल डे. राइट. महबूब स्टूडियो में शूट था. हम सेट 1 से सेट 2 जा रहे थे. सेट 1 एक जगह पे था, सेट 2 कुछ 100-150 मीटर दूर था. तो हम चलते चलते जा रहे थे सर के साथ. एंड सर स्मोक करते करते सोच रहे थे, इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गाइज आई हैव मेट. राइट. सर ने सेट 1 टू सेट 2 जो 100-150 मीटर दूर है एक दूसरे से, उसमें 10 पेज की स्क्रिप्ट पढ़ी. ओके. सामने वाले बंदे ने कुछ लाइक ऐसे कुछ महीनों से मेहनत कर रहा था स्क्रिप्ट पे. सेट पे सर गए, हमको लगा यार क्या किया. एंड दैट वाज वन ऑफ आवर फर्स्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ वर्किंग विद हिम. वी वर लाइक ये क्या यार, ओवर कॉन्फिडेंस, ऐसे ही स्क्रिप्ट ऊपर से देख ली, बेचारे ने इतनी मेहनत की है. दैट वाज माय फर्स्ट इंप्रेशन. Went on the set, was seeing the filming of that episode. इन्होंने सेट 1 टू सेट 2 चलते चलते वो स्क्रिप्ट बाय हार्ट कर ली है. स्क्रिप्ट पढ़े बगैर. वो बंदा जो कूफ अप कर रहा है, जो इंटरव्यू ले रहा है, हाँ. उसको बोल रहा है नहीं भाई तेरी स्क्रिप्ट में ये लाइन पे ये लिखा था. लाइक भाई इसको कैसे पता है? सर ने 100 मीटर के वॉक में 10 पेज की स्क्रिप्ट कैसे पढ़ ली? जहाँ 100 जन आके ऑटोग्राफ ले रहे हैं और क्या हो रहा है. राइट. हम लोग चल रहे हैं ऑफ कोर्स विद बॉडीगार्ड्स एंड एवरीथिंग, एंड मल्टीपल पीपल आर लाइक बाउंसिंग ऑन हिम. ये वो चल रहा है और वो सर स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ रहे हैं. एंड विद इन 10 मिनट्स ही ब्लडी न्यू द स्क्रिप्ट बाय हार्ट. तो बंदा सुपरस्टार है. और वो यार क्या बोलूं मैं यार, मतलब like I have seen this like absolute first hand information. So that is how he is as a person. Like I've seen this reaction from so many people, like big हमने यार, मैं आपको celebrities. बता रहा हूँ यार, you name a celebrity we worked with them. But मैं अगर कोई celebrity का fan हूँ तो वो शाहरुख. Right? So for me, one of the proudest moment as organization was Zero के बाद he did a photo op with all partners who worked on the movie. And backdrop पे उन्होंने Zero का लोगो लगाया था, WRM का लोगो था. राइट. मेरी पूरी टीम थी जिसने काम किया था, शाहरुख खान थे. राइट. और उन्होंने सबके साथ एक फोटो लिया, बैकड्रॉप पे हमारा लोगो था. लाइक फॉर मी दैट वाज अ मोमेंट कि यार मजा आ गया. Wow. Yeah. He's crazy good, humble, na? Very like Intelligent, boss, intelligent, wit. and plus like you, I don't think so कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसी फेम इंडिया में किसी ने भी देखी होगी. Correct. Like they are just to a pinnacle of fame. Correct. क्या किस तरीके से फेम क्या होती है? So for us, one of the toughest project to crack was a shoot we were doing as a shoulder content for a movie called Badla. Badla was a movie of Amitabh Bachchan and Taapsee Pannu, produced by Red Chillies. Red Chillies, right? So we realized कि एक particular Friday को we had common time available of Amitabh Bachchan and Shahrukh Khan. तो हमें एक स्क्रिप्ट क्रैक करनी थी जिसमें शाहरुख खान would interview Amitabh Bachchan as a fan. So for me, it was me as in the team. It was like boss, एक साइड शाहरुख खान, एक साइड अमिताभ बच्चन, उनकी स्क्रिप्ट क्रैक करनी. So and we had about 36 hours to crack it. Wow. So fantastic experience, of course. Yeah, I watched that interview. Badla Unplugged. Yeah. Fantastic. मस्त मजा आया था, मतलब. And it was like देखते रहो and you see it happening and you are like यार they are bona fide superstars for a reason.
उनको जो दुनिया भर में प्यार मिल रहा है वो सही है यार, गलत है ही नहीं कुछ. It is true. When you work with this kind of people, आप में क्या बदलाव आता है? मुझे डीप क्वेश्चन नहीं पूछना, बट आई एम जस्ट सेइंग कि एस्पिरेशन किस हिसाब से सोच लाइक, बिकॉज आई एम ऑल्सो लेफ्ट विंग पर्सन, दैट्स व्हाई आई एम एनालाइजिंग दिस सिचुएशन. हाँ, सो आई जस्ट वांट टू नो आपके एस्पिरेशन में फिर किस तरीके से चेंज आते हैं व्हेन यू वर्क विद अमिताभ बच्चन, व्हेन यू वर्क विद ऐसा के, लाइक क्या प्रूव करना है? सब कुछ तो अचीव कर लिया है बॉस, स्टिल दे आर गोइंग एट इट. he said this thing कि अभी आई एम वर्किंग फॉर एंटरटेनमेंट बिकॉज अचीव करना था कर लिया, बट एज अ सुपरस्टार इट्स माय ड्यूटी टू पीपल कि मैं लोगों को एंटरटेन करता रहूं. दैट्स व्हाई ही इज डूइंग दिस फिल्म. सो एस्पिरेशन अभी वहां से तक चेंज हो गया है. सो व्हाट आर सम ऑफ द थिंग, लाइक एस्पिरेशन किस हिसाब से चेंज होता है? हाँ भाई यार, सो मैंने ना एक इंटरव्यू देखा था शाहरुख खान का डेविड लेटरमैन शो में. आई वॉच्ड इट. हाँ, उसमें उन्होंने एक बहुत बढ़िया लाइन बोली थी. He said, यार, individually I'm a shy person. Gauri and Shahrukh are shy. And again, this is verbatim from the interview. This is no official statement. हाँ. उन्होंने उसमें बोला था कि यार, but I believe कि जो जिस हिसाब और जिस क्वांटम से प्यार मिल रहा है, a myth has been created called Shahrukh Khan. And I am an employee of that myth. That is what Shahrukh Khan said. Right? He works for the myth called Shahrukh Khan. Right? And I'm like, wow, क्या answer है? Like, sorry, I didn't want to give a deep answer to this, but आप ये point सोचो, like उन्होंने इतना fandom जीत लिया है. मतलब वो मैस्लोस हायरार्की थियरी आप देखते हो ना, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद वाला स्टेज है. वो भी हो गया. अब क्या? वही. It's that stage. It's the theta stage. Yeah. Nice. I think that's it. Thank you very much. We have talked enough, like almost about 2 hours, and we didn't realize it. So I think that's a good sign of a good conversation. I hope. Yeah. Yeah. And honestly, tell me your experience. यार मजा आया. I love the curiosity which you had. Right. I loved the fact that it was decently well structured, yet free flowing. Right. You realize there were times when it went too deep. You switched gears to fun. You switched back to deep. Right. You came with an agenda to make it deep is what I understood. So I tried to make it to give you those answers. And you were well researched, which I respect as a quality. आपने काफी पॉडकास्ट मेरे देखे थे, समझे थे, आपने अपनी नोट्स सही बनाई. So that's a quality I really admire when people respect other people's time by doing well research. So मजा आया. Good fun यार. Yeah. I also had a fun. My agenda was कि आपकी एक नई साइड दिखे लोगों को, apart from just being an agency founder. Correct. और दूसरे और fun आंसर्स भी मिले. I really enjoyed the movie marketing thing because that's I'm inherently curious about. Super. Yes. Yeah, we can have more sessions later as well. Where offline I'll tell you how does the business of movie marketing work. Sure, I would love to hear from you. Correct. Thank you so much. It was a long episode. I know. I'm sure you would have learned a few things. If you enjoyed watching this episode, my request is to subscribe to this podcast. This podcast would help you be in the spotlight with your friends. This podcast will make you a lot more curious in life and help you succeed. And of course, you would have seen कि यार बंदा काफी फन क्वेश्चंस भी पूछता है, तो बोर नहीं होगे, पक्की बात है. तो सब्सक्राइब कर लो, मजा आएगा.